Good evening students, hope you all are doing well. In today's video we will start with another topic in the unit 1, and this is the transport of water, which is also called the ascent of the sap. Once the water is being absorbed from the soil into the roots of the plant, the process was called the absorption. Soil से plant की roots तक water आ जाना, and particularly to the root xylem was called the absorption of water. जैसे ही रूट्स ऑफ जाइलम ऑफ रूट्स में वाटर आ जाएगा, उसके बाद थ्रू आउट द प्लांट वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा. सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम और द अपर पार्ट्स लाइक ब्रांचेज एंड द लीव्स. सो द वाटर मूवमेंट इज ऑलवेज यूनि डायरेक्शनल, बिकॉज प्लांट में हमेशा रूट से ही वाटर जाता है. दिस इज द कैनोपी, दीज विल बी ब्रांचेज एंड लीव्स, देयर मे बी मोर लीव्स, एंड दिस इज द रूट. पर्टिकुलरली रूट के जाइलम तक एक टिश्यू होता है वाटर कंडक्शन के लिए, एक नेटवर्क होता है, एनाटॉमी में हमने पढ़ा है. सपोज दिस इज द जाइलम ऑफ द रूट्स. तो जाइलम ऑफ रूट में एक बार वाटर आ गया, इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. यहाँ पे वाटर आने के बाद जाइलम ऑफ द रूट से स्टेम के जो जाइलम है उसमें वाटर जाएगा, ठीक है, और फिर स्टेम का जो जाइलम है उससे स्टेम के अदर सेल्स में जाएगा जहाँ भी ज़रूरत होगी. जाइलम ऑफ द स्टेम से जाइलम ऑफ लीफ में जाएंगे, जहाँ से पूरे लीफ में वाटर की जो है कंडक्शन होती जाएगी, बिकॉज वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, एज वेल एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर इज बीइंग अगेन इवापोरेटेड इनटू द एनवायरनमेंट विच वाज कॉल्ड द ट्रांसपीरेशन. सो वाटर का ये मूवमेंट फ्रॉम रूट टू द स्टेम और द लीव्स, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर, एंड इट इज़ ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल. हमेशा रूट से स्टेम वाया स्टेम लीफ की तरफ होगा, कभी भी लीफ से वाटर रूट में नहीं आएगा, नेवर. इट कैन नॉट हैपन कि रेन टाइम है, बारिश आई, पत्तों पे पानी है, वो डायरेक्ट सॉइल में चला जाए, प्लांट के थ्रू होता हुआ, ऐसा कभी भी नहीं होगा. यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ऑलवेज अपवर्ड मूवमेंट होगा, एंड द वाटर मूव्स ऑलवेज थ्रू अ टिश्यू विच इज़ कॉल्ड द जाइलम. Xylem is a conducting tissue which can transport the water as well as the minerals. So along with the minerals, the water, mainly the water, is transported through the xylem tissue. So these are some basics about the transport of water, and the process of movement of the water from the root to the leaves via stem is called the transport of water or the ascent of the sap. So it occurs through the xylem tissue. It is always unidirectional. The water is mainly transported by the vessels and the tracheids. We have discussed the water is transported by a tissue xylem, and we know the tissues are made up of the cells or the group of the cells. So in the xylem tissue particularly, there are different type of the cell. One are the vessels, which are the hollow pipes of generally broad diameter than the other cells, not the too much broader, hardly they are of nanometer length, suppose 2 or 3 nanometer, but they are wider than the other type of the cells in the xylem tissue. So these are the vessels, these are the tracheids. The difference between the tracheids and vessels is that the tracheids have a narrow diameter and they does not have openings. Like these are the openings like pipes. Vessels are placed one above the other and look like similarly like a chain of the pipes or a hollow pipe. These are the tracheids. They have a closed opening. They have a closed ends and the tapering ends. The water is transported through the vessels simply like it is being flowing in a pipe. And whenever it will transport it through the tracheids, it will reach here and reach to the next tracheid by the bordered pits. There are the presence of the pits, so water will transport like this. Along with the vessels and the tracheids, this all we have also studied in the anatomy. You most probably studied in the 10+1 class, and also in the next semester, that is your third semester, about the detailed anatomy of the xylem tissue. But here I am quickly revising this. The vessels and tracheids transport the water. Along with the vessels and tracheids, in the xylem, there are presence of the parenchyma cells, which are called the xylem parenchyma, and the fiber cells, which are called the xylem fibers. So since there are 4 types of the cell, one are the fibers, another are the parenchyma, third are the vessels, and fourth is the tracheid. So group of these cells is completely called the xylem, and that's why it is called tissue. And since all of the cells are alike or dissimilar, these are fibers, these are parenchyma, these are vessels, and these are the tracheids. So this is a complex tissue. The xylem is called a complex tissue because it is made up of a different kind of the cells. So along in these 4 types of the cells, the vessels and tracheids are responsible for the water transport. In the angiosperms, the vessels are chief conducting tissue. In the gymnosperms, the tracheids are the chief conducting tissue, because in the gymnosperms the vessels are absent.
So you should also remember this. In the gymnosperms, the vessels are absent, so tracheids will be the important conducting tissue for the water. But in the angiosperms, the vessels are the chief conducting tissue, but tracheids are also present. But in gymnosperms, only the tracheids are present, not the vessels. In angiosperm, both of these cells are present, vessels as well as tracheids. So now let's just talk about some data. Due to the ascent of the sap, the water can move up to a certain height of the 800 to 1000 feet. By this process, we will discuss some different theories or the validated theories which support the process of the transport of water, or which are actually responsible for the transport of water in the plant. So due to them, the water can move up to 800 to 1000 feet, but the tallest plant are generally 450 feet long. The tallest plant in the world are the Sequoia semiperviens, which are the gymnosperms, also called the redwood tree of the California. The redwood tree of California, the species and genus name are the Sequoia semiperviens, are a class of the gymnosperms. Okay, so उनमें भी अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हो रहा है अप टू 450 फीट, ओके, रूट से वाटर जाएगा, जो हाईएस्ट लीफ होंगी वो 450 फीट पे होंगी, 450 फीट पे. और एज आई टोल्ड यू अर्लियर, द वाटर इज ऑलवेज मूवमेंट इज अपवर्ड और द यूनि डायरेक्शनल. तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बारिश का जो पानी है वो अपर लीव्स को मिलेगा, अपर लीव्स तक भी पानी सॉइल से ही जाएगा. सो द मूवमेंट ऑफ वाटर सच अप टू सच एक्सटेंट इज अचीव्ड बाय द प्रोसेस एसेंट ऑफ सैप. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो है कितनी भी हाइट हो, 800 टू 1000 फीट तक भी हो सकता है. एंड जनरली टॉलेस्ट प्लांट 450 फीट के होते हैं. सो दिस इज़ अ magical data that such amount of the water or such height, up to the such height of the plants, the water can transport or move. If we talk about the angiosperms like eucalyptus, सफ़ेदे का जो पेड़ होता है उसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 100 फीट होती है. द टॉलेस्ट प्लांट सेक्यूया सेमीपर्वियंस वर दी जिम्नोस्पर्म्स. अगर टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की बात करें, यूकेलिप्टस या सफ़ेदा जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी 100 फीट तक पानी चले जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एसेंट ऑफ सैप. सो दिस इज़ कॉल्ड दी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. Let's just discuss about some theories in brief. There were different views of different scientists that give that this is the method for the transport of the water. Okay, so we will discuss them one by one in brief. First, the vital theory by J.C. Bose. Our Indian scientist Jagdish Chandra Bose stated that the transport of water from one cell to the another cell occurs by the vital activities, by the pumping of the cells. They said that these cells pumped the water from themselves to the next cell and the next to the upper and so on. So up to a certain height, the water just pumped the water itself, not by any another energy or any other process involved. So this theory was rejected because there is no such pumping of the water seen in the plant cells. So this theory was rejected. Next was the Inhibition theory by Julius Sachs. A scientist, Julius, they stated that the inhibition property of the cells or the movement of inhibition, water movement, is responsible for the transport of the water. So hardly by the inhibition the water transport up to 1 feet height. So in plants like Sequoia semiperviens, how it would be transported up to such height like 450 feet. So this theory was also rejected. Next was the capillary theory, which is also a physical theory based on the physical properties of the water by the Boehm. Boehm was a scientist. So they stated that water move from one cell to the another by the capillary action of water. So it is also seen that by the capillary action of the water, water can move maximum up to a height of 3 to 4 feet, which is not enough to pump the water for the longer plants like Sequoia, as I told you earlier. If the plant is 100 feet, so it can never pump the water or it can never transport the water by only capillary action. So this theory was also rejected. Another theory given was the root pressure theory, the fourth one. Root pressure theory was not rejected, but it was limited. It occurs only during the daytime, only the night time, sorry. In the night time, whenever the transpiration is not occurring, so there will be no passive absorption. हमने absorption में active और passive पढ़े हैं. तो active absorption हमने पढ़ा था कि active absorption में roots की जो cells होती हैं वो खुद की एनर्जी खर्च करती हैं और वाटर को एक्वायर करती हैं डायरेक्टली या सोल्यूट एक्वायर करके कंसनट्रेशन के थ्रू वाटर को ले लेंगे. तो एक बार जब रूट सेल्स ने एनर्जी खर्च करी तो वाटर एब्जॉर्ब हो गया सॉइल से रूट सेल्स के अंदर, रूट के जाइलम के अंदर. अब यही सेल्स, रूट सेल्स अपनी एनर्जी खर्च करेंगे और उस वाटर को आगे तक भेजेंगे.
ओके, लाइक मोटर कोई भी होती है घर पे, हम ऊपर पानी चढ़ाने के लिए मोटर को यूज़ करते हैं, सो दैट इज़ एक्सटर्नल एनर्जी, हमने एनर्जी खर्च करके पानी को ऊपर चढ़ाया। उसी तरह से प्लांट की जो रूट सेल्स हैं वो अपनी एनर्जी खर्च करके ऊपर तक पानी को भेजते हैं, बट दिस वाटर मूवमेंट कैन बी अकर अप टू ए हाइट ऑफ 20 फीट जनरली। इस तरह से रूट प्रेशर के थ्रू, यानी एक्टिवली एनर्जी खर्च करके, रूट खुद की एनर्जी खर्च करके 20 फीट तक ही पानी भेज सकते हैं। तो उस एनर्जी खर्च करने की वजह से जो अपवर्ड मूवमेंट हुआ वाटर का, तो रूट के अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो गया, उसको हम रूट प्रेशर बोलते हैं। रूट प्रेशर इज क्रिएटेड बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी बाय रूट सेल इज सेल्फ। रूट सेल्स खुद एनर्जी खर्च करती हैं, उसकी वजह से एक प्रेशर बना रूट के अंदर, क्योंकि पानी ले लिया उन्होंने और उस पानी को ऊपर भेज रहे हैं। सो दिस प्रेशर इज कॉल्ड द पॉजिटिव रूट प्रेशर। So positive root pressure is also responsible for the transport of the water, but hardly up to the 20 feet. So this theory was not rejected because during the night time this occurs. Root cells अपनी एनर्जी खर्च करती हैं, एक्टिवली वाटर को एब्जॉर्ब भी करती हैं और ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, बट एक हाइट तक 20 फीट तक। तो सभी प्लांट्स में लाइक सिक्यूया सेमीपर्पियंस 450 फुट हाइट है, उनके अंदर रूट प्रेशर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट रूट प्रेशर इज लिमिटेड अप टू नाइट टाइम। नाइट टाइम में चाहे कोई भी प्लांट हो, कितनी भी हाइट का हो, उसके अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, चाहे 20-25 फीट तक हो, वो रूट प्रेशर के थ्रू होता है, क्योंकि नाइट टाइम में ट्रांसपीरेशन नहीं होता कभी भी, जो कि मेन रिस्पॉन्सिबल फोर्स है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए, विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो रूट प्रेशर इज अकरिंग ड्यूरिंग द नाइट टाइम एज वेल एज इन यंग प्लांट्स। जो यंग प्लांट होते हैं जिनमें लीफ नहीं बने, उनमें ट्रांसपीरेशन भी नहीं होगा, तो उनमें वाटर का जो अपटेक होता है वो एनर्जी खर्च करके होता है, यानी वो बाई रूट प्रेशर होता है। ओके, तो रूट प्रेशर की वजह से नाइट टाइम में क्या होता है, सपोज किसी प्लांट की हाइट 10 फीट है, तो उसमें क्या होगा, रूट्स ने एनर्जी खर्च करी, वाटर को अपटेक किया, 10 फीट तक वाटर चला गया, उसके बाद वाटर कहीं तो जाए, तो वो लीव्स में चले जाता है। लीव्स में वाटर गया, तो लीव्स में क्योंकि एक्सेस है, अभी तो वाटर 20 फीट तक भी जा सकता था, अमाउंट एनर्जी अच्छी है रूट सेल्स के पास, तो ये लीव्स से बाहर आ जाता है वाटर। मॉर्निंग में ऐसा लगता है जैसे लीव्स के ऊपर ड्यू है, ओस की बूंदे हैं, बट दीज आर एक्चुअली नॉट द ड्यू, दीज आर दी जाइलम सैप। ये वाटर है जाइलम का, जो रात के टाइम में वाटर अपटेक किया था सेल्स ने, रूट सेल्स ने, वो लीव्स के थ्रू बाहर आ गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गटेशन। यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दिस टर्म, दिस इज कॉल्ड द गटेशन। गटेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट प्रेशर। अगर प्लांट की हाइट 50 फीट होती तो स्टेम में 20 फीट पे जाके कॉलम ब्रेक हो जाता, यहाँ तक ही पानी चढ़ पाता, बिकॉज रूट सेल्स इतनी भी इनफ नहीं है कि 100 फीट तक पानी भेज दे, बिकॉज मैंने बताया ना 20 फीट तक मैक्सिमम रूट प्रेशर के थ्रू पानी जा सकता है, लेकिन हाइट ही 10 फीट है, तो उसके बाद उसको लीव्स के थ्रू बाहर निकलना पड़ता है, तो वो जो पानी बाहर निकलता है, एक्सडिशन ऑफ द जाइलम सैप इज कॉल्ड द गटेशन। सो दिस इज द रूट प्रेशर थ्योरी। So it is also somehow not rejected, but it is limited during the night time and in the young plants only. So the most accurate or the most validated theory for the ascent of sap or the transport of water was given by the Dixon and Joly, and this is called the transpiration pull theory, also called the cohesion tension theory. It is a physical theory based on the physical properties of the water as well as an important phenomena which is called the transpiration. Same like the पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इट इज़ रिलेटेड विद द पैसिव एब्जॉर्प्शन। जिस तरह से पैसिव एब्जॉर्प्शन ट्रांसपीरेशन के थ्रू होता था, उसी तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर भी मैक्सिमम या डे टाइम में किसके थ्रू होता है, ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी के थ्रू होता है। सो दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट द ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी। इट वाज बेसिक्स ऑफ द एसेंट ऑफ सैप और द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।